Good morning, students. Now the next topic is sodium hydroxide. In the last video there is a topic that is the washing soda and the baking soda. Now the next topic is about the sodium hydroxide. So firstly we have to discuss its chemical formula. So its chemical formula is NaOH, that is the sodium hydroxide. So it is an example of strong alkali, that is base. What is the meaning of alkali? Base. It is commonly known as caustic soda. So now its preparation. For its preparation we need NaCl and water. In the presence of electric current we can prepare it, that is NaOH. Now see the equation, that is NaCl plus water. This is aqueous form and this is in liquid form. In the presence of electric current the formation of NaOH takes place, and with chlorine and hydrogen. This is the preparation of NaOH. So due to the formation of NaOH and Cl2 together, this process is known as chlor-alkali process. This stands for chlorine and this stands for the base, that is the NaOH. Clear? So this is the preparation of the NaOH, that is the sodium hydroxide. Now next one is the properties. First property is its color is white. What is the color of this compound? This is white. And next one is it is highly soluble in water. Its solubility in water is high and it has high melting and boiling point. Also it is corrosive in nature. It is the conductor of electricity in aqueous solution. That means when it is present in its aqueous form, it conducts with electricity. It can emulsify the fat and oil in water. That means emulsifying agent. That is, it can emulsify the fat and the oil in water. So these are some properties of the sodium hydroxide. So now next topic is about their uses. So first use, that is, it is used in the manufacturing of soap and detergents. Students, oftenly we make the soaps and detergents, and this one, that is the NaOH, is used as a major constituent for the formation of the soaps and the detergents. So it is an important compound. And next one, it is used in the manufacturing of the टेक्सटाइल. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी इसका लार्ज अमाउंट पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर. एंड नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग द मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन दिस टॉपिक देयर इज वन प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टीज, that is their physical properties, and the use of the sodium hydroxide. So next compound is bleaching powder. So firstly, what is the formula of bleaching powder? That is calcium oxychloride. That's this one, CaOCl2. This is the formula of bleaching powder, and it is formed with slaked lime. So what is slaked lime? Calcium hydroxide is known as the slaked lime. When slaked lime is reacted with chlorine, calcium oxychloride formation takes place, and this is known as the bleaching powder. So see the reaction. CaOH twice plus chlorine gives us bleaching powder. So next one is the properties. It is yellowish white powder having the smell of chlorine. इसकी स्मेल कैसी होती है? जैसे क्लोरीन की होती है. और इसका कलर कैसा है? येलोइश व्हाइट. मीन्स ना ही कंप्लीट व्हाइट है और ना ही कंप्लीट इसका कलर येलो है. तो ये कलर क्या है? येलोइश व्हाइट. नेक्स्ट वन, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर.
and whenever it reacts with carbon dioxide, it forms calcium carbonate, that is CaO, Cl2 plus carbon dioxide gives us CaCO3, and with the help of acid it form calcium chloride. HCl के साथ क्या बनाएगा ये? Calcium chloride. Now some uses. Bleaching of paper and cotton. It is used for the bleaching purposes of paper and cotton. Preparation of large number of inorganic and organic compounds. Also for the bleaching of the cotton clothes. Now disinfecting the drinking water. That means for the killing of the germs. जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स. क्लियर? सो दिस वन द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड सम यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर. नाउ लास्ट टॉपिक इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस. दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज POP and its formula is CaSO4, that is the calcium sulfate into 1/2 water. That is, it is a formula of POP and it is formed by gypsum. So what is the formula of gypsum? Only difference is in the water molecules. Here 1/2 water and here is 2 water. CaSO4 2 water, that gives us calcium sulfate into 1/2 water प्लस 1/2 वाटर. वाटर यहाँ से क्योंकि हीट कर रहे हैं इसको, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 वाटर. नाउ सम प्रॉपर्टीज, दैट इज इट इज ऑफ वाइट अमॉर्फस पाउडर. इट्स कलर इज ऑफ वाइट, नॉट कंप्लीटली वाइट, दिस इज ऑफ वाइट एंड इट्स टच इज सॉपी टच एंड ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास. जब इसको हम हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक हार्ड मास में, एक सॉलिड मास में. एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, नॉट कंप्लीटली, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. नाउ सम यूजेस. इट इज यूज्ड इन डेंटल डिजाइनिंग. फर्स्ट यूज इन डेंटल डिजाइनिंग. नेक्स्ट वन इन हॉस्पिटल्स. इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स. हमें पता है कि जब हमारे कई बार बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके ऊपर है एक हम व्हाइट कलर का जो है वो प्लास्टर चढ़ाते हैं. दैट वन इज नोन एज द POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टॉयज. क्लियर? फॉर मेकिंग द सम अदर टॉयज. ठीक है, मेकिंग ऑफ टॉयज. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग. पेंटिंग करने से पहले सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका जो है वो हम यूज करते हैं. सो दिस इज द POP, that is your plaster of Paris, and it is formed with the help of gypsum and its color is off-white color. It is sparingly soluble in water. This is some key points of the plaster of Paris. So today there is a 3 topics, that is, and this is small topic, sodium hydroxide, bleaching powder, and next one is the plaster of Paris.